conservation. Dear students, you know that resources, there are natural resources as well as man-made resources, and both natural as well as the man-made resources, they are very important for human population. And when human population is growing continuously, the consumption of these resources is also increasing. So it is vice versa. जितनी population grow हो जाएगी तो वैसे ही जो natural resources है उनकी demands है या उनकी utilization है वो भी दिन ब दिन increase हो जाएगी. ठीक है. With the increase of industrialization and urbanization, use of all these resources is increasing day by day. ठीक है. सो जितनी आप देख रहे हैं दिन ब दिन ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, न्यू industries are formed or constructed, so more resources are needed day by day. And as per the urbanization, resources consumption of resources are increasing day by day. But there is one point that if resources are not properly managed or used, there will be a serious scarcity of these resources. ठीक है? Because you know that resources, they are limited. Here, from one side, if population gets increased day by day, so consumption of resources are simultaneously gets increased. ठीक है? So there is important that we should maintain the balance between the resource properly managed of resources. ठीक है. Otherwise there will scarcity of these resources. अगर हम properly resources को manage नहीं करेंगे, उनको properly हम utilize नहीं करेंगे, so sometimes या after some time scarcity of resources का हमें face करना पड़ेगा. So in order to prevent this scarcity, we should conserve the resources. ठीक है. So it is our responsibility to conserve both natural as well as the man-made resources, because these resources, they are important for human population, and if we are not managing them properly, so there will be scarcity. ठीक है. नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन. कंजर्वेशन क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि रिसोर्स जो है ये बहुत ही लिमिटेड है, इम्पोर्टेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है, एंड वी हैव टू मैनेज देम प्रॉपरली, अदरवाइज वी विल फेस सिक्योरिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज. सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस सिक्योरिटी? ठीक है. हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस सिक्योरिटी और मेंटेन इट इज मैनेज्ड प्रॉपरली? सो देयर इज वन टर्म दैट इज कंजर्वेशन. आप कैसे इसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे रिसोर्सेज को और सिक्योरिटी को कैसे प्रिवेंट करेंगे, वो आप थ्रू कंजर्वेशन करेंगे. ठीक है. इट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ resources. Now what is conservation? It is the proper management of natural resources to prevent its exploitation, destruction or degradation. ठीक है. सो कंजर्वेशन जो है, इट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट इट इज डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन एंड destruction, exploitation. ठीक है. Why should we conserve natural resources? ठीक है. एक पॉइंट अराइज हो जाता है कि हमें क्यों नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है. सी, nature provides all the basic needs which are necessary to us, but we are exploiting or overusing these resources. If we go on exploiting the nature, there will be no more resources available in the future. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बिकॉज जो रिसोर्सेज है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारी जनरेशन है, अगर हम आज जो हमारी जनरेशन है रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व नहीं करेंगे, जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं हो जाएंगे. ठीक है. सो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंजर्व अवर रिसोर्सेज, सो दैट जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. बिकॉज जो रिसोर्सेज है ये हमारे बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ को फुलफिल करते हैं, एंड दीज रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. ठीक है.
So there is an urgent need to conserve the nature, to maintain ecological balance for supporting life, to preserve different types of biodiversity, to preserve the natural resources for the present and future generation. ठीक है, that is why we should conserve natural resources. So these are some points by which you can conserve natural resources. Conservation of natural resources in India कैसे करते हैं? Regulation and reforms for proper housing and infrastructure development to avoid land acquisition problem. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने कुछ सर्टन मेजर्स फॉलो ये अंडरटेक किए हैं. सो वी शुड फॉलो these measures in order to conserve our natural resources. So first undertaken measure from government of India is regulation and reforms for proper housing, ठीक है, and infrastructure development to avoid land acquisition problems. Mass media public service message to educate the people on the importance of conservation of resources, increase the wildlife and forest reserves in the country, schemes to do a proper inventory of the resources and monitor changes in the environment, various projects and schemes that promote conservation of resources. So these are some preventive measures that are formulated from the government of India in order to conserve the natural resources. So under natural resources, there are four things which we have to conserve, like soil, water, biodiversity and forest. Now today we discuss one natural resource, that is soil. As you know that this soil, it is very important natural resource, and how can we conserve this natural resource? So there are some points by which you can conserve this natural resource. First is crop rotation, next is mulching, strip cropping, ड्राई फार्मिंग मेथड. ठीक है, बिकॉज अगर आप सॉइल को कंजर्व नहीं करेंगे, सॉइल फर्टाइल हो जाएगी. ठीक है, सो हम कंस्ट्रक्ट नहीं कुछ कर पाएंगे, ना एग्रीकल्चर हो पाएगा, ना क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगी. बिकॉज जो सॉइल है इस पे तो हमारी लाइफ पूरी होली एंड सोली डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर सॉइल को हम कंजर्व नहीं करेंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी. बिकॉज जो वो प्लांट जो है वो तो होल्ड करते हैं, इस उसकी रूट जो है वो जमीन को होल्ड करते हैं. सो अगर जो सॉइल है, जब से जैसे नेचुरल कैलमिटीज आ जाती है, उसकी वजह से सॉइल जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है. ठीक है, बह जाती है, प्रॉपर फिर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो जाती है. ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम किसी भी, चाहे इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज है या अपने हाउसेस. सो we should conserve our soil. First is crop rotation. क्रॉप रोटेशन क्या होता है? Alternatively growing a cereal and a legume in the same field will not only increase the yield but also increase the fertility of the soil. They also help in checking soil erosion. ठीक है, हमें क्रॉप को, जो क्रॉप प्रोडक्शन जहाँ जिस जमीन में हो रही है, वहां पे हमें डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए in order to improve the soil fertility and prevent the soil erosion. ठीक है, नेक्स्ट जो कंजर्वेटिव पॉइंट है ऑफ सॉइल, that is mulching. Interculturing operations will kill weeds and soil mulch help the plants to be rooted firmly in the soil. Next, strip cropping. This is an agricultural practice of growing plants in suitable strips in the field. This is of the following types. ठीक है, जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है, हमें जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें हमें आपको प्रॉपर लाइनिंग में, मैं आपको अभी थ्रू पिक्चर दिखाऊंगी कि स्ट्रिप क्रॉपिंग कैसे करते हैं. ठीक है, उससे भी सॉइल को आप कंजर्व कर सकते हैं. Dry farming method, this may be practiced where rainfall is low, indefinite and variable. In dry farming method, only crops are grown that can sustain even a very low rainfall. So these are the 4 points by which you can conserve soil. See some images of soil conservation. ये देखिए, this is mulching. ठीक है, strip farming,
this is crop rotation, ठीक है, and this is dry farming. So these are the four methods by which you can conserve soil. ठीक है, I hope you understand this soil conservation and what is how can we conserve the natural resources. So in next lecture we discuss another natural resource, how can we conserve them. Thank you so much for today's lecture.